So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about the important constitutional amendments. So I hope you are aware that these constitutional amendments are very, very important. And these are asked in many exams. So what we will do is actually, we will discuss the prominent constitutional amendment, because we have seen almost around 106 amendment and it is not possible to actually remember all the amendments, but since the beginning till last we will discuss the important ones, and खास के last में जो 99 amendments से लेकर 106 तक we will discuss each and every one, the recent ones, ठीक है, because recent ones are of course very much asked, but हम लोग थोड़ा सा history भी जानेंगे. We will see some of the past important amendments also in this class. So am I audible, visible, everything is fine? If yes, then please write yes in the comments. Okay, so can you please tell me which amendment, which article of the Indian Constitution primarily deals with amendment? Yes, good afternoon, Priyanshi, Kushagra. Which article of the Indian Constitution primarily deals with amendment of the Indian Constitution? Anyone? So it is Article 368. Although we have told you a lot of times that it is not the only article. There are other articles also under which you can amend the Constitution, but primarily, by and large, in 70-80% of the cases, Article 368 is used to amend the Constitution. It is done by the Parliament. Okay? Yes, Kushagra, Priyanshi, you both are right. So let us begin with the first amendment, which actually was brought during the time of Jawaharlal Nehru in 1951. You have to tell me that which schedule was added by this. 7th schedule, 11th schedule, 9th schedule, 12th schedule. I have already taken a separate class on schedules. All the 12 schedules I have done. So please tell me, by first Constitution Amendment 1951, a new schedule was inserted. You can apply the logic. I hope you are aware of that. And मैंने इस क्लास में बताया भी है कि originally we had 8 schedules. Now later on, now we are having 12 schedules. 8 के बाद पहला जो amendment होगा, of course 9 schedule add होगा. Yes, so the right answer is C. Yes, Priyanshi and Kushagra, you both are right. Kumari Bhavana, you are also right. So 9th schedule was added by first amendment 1951 to protect some laws from judicial review, to protect the laws, especially related with zamindari abolition and all, from judicial review, so that it cannot be challenged in the court. तो 9th शेड्यूल में अगर कोई कानून डाल दिया जाता था तो उस वक्त ऐसा था कि उसको अदालत में या जुडिशरी में चैलेंज नहीं किया सकता था. ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट था, है ना. So that cannot be challenged in the courts, brought in 1951 by first amendment, because the idea was to abolish zamindari, because zamindari में क्या था, there were lot of inequalities. एक आदमी उसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, huge amount of जमीन है, अब बाकी लोग बेचारे गरीब हैं. So to avoid that, to offset that zamindari system, this law was actually brought, and the 9th schedule inserted some articles also, like the most prominent one is 31 capital B, okay, which is related with that. 31 capital B में ही mentioned है, ठीक है, 31 capital A and 31 capital B. So when you read 9th schedule, it directly talks about 31 capital B. Okay, so 31 capital B में ये लिखा, validation of certain acts and regulations. हाँ, तो मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर even if we are making a law which actually violates the fundamental rights, still it can be protected and all, ये सब है, and it cannot be challenged in the court, है ना. So that is, so जो ये laws थे, these laws cannot be challenged ideally originally in the court of law, ठीक है. लेकिन उसके बाद मैंने बताया भी था इस क्लास में, in this class I have discussed also, कि in IR Coelho case the Supreme Court said कि नहीं, इसके बाद Supreme Court ने कहा कि 24th April 1973 when Keshavananda Bharati judgment came. I am sure you must have heard this judgment. केशवनंदा भारती जजमेंट किस डेट को आया था, 1973 में. इस जजमेंट के बाद, बिकॉज इट केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, दैट if any law violates basic structure, it can be struck down by the Supreme Court. तो IR कोयलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, 9th शेड्यूल में 24th अप्रैल 1973 के बाद जो लॉ डाला गया है, देखो ये सब जो है ना, ये सब पहले डाला गया था 1948 में. But those laws which were inserted in 9th schedule after the date of 24th April 1973 can be challenged in the Supreme Court, but only on one ground, and that ground is violation of basic structure. सिर्फ एक ग्राउंड पे अदालत में चैलेंज किया सकता है 9th शेड्यूल में अगर कोई लॉ है, और वो लॉ जो 24 अप्रैल 1973 के बाद डाला गया हो, ठीक है, और किस रीजन से, अगर बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करो. दैट इज व्हाट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. आई होप इट इज क्लियर. इज इट क्लियर?
है ना. Now let's move on. First amendment say now we are moving towards 7th amendment 1956. This is also very, very important, and that is why I'm asking it. Which of the following part was deleted by the 7th amendment 1956? Yes. तो मैंने कल की क्लास में यहाँ लास्ट क्लास में जस्ट गो एंड सर्च दिस पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करियर लॉन्चर, सर्च दिस, यू विल गेट दिस वीडियो. ठीक है. इसमें मैंने सारे ऑल 25 पार्ट्स डिस्कस कराए और इसमें मैंने डिस्कस भी किया था कि 7th amendment actually deleted this article part. Which part was deleted? Not part 9. Part 9 is still there, related with panchayats. मैंने कल ही बताया था. 9A is related with municipalities. 9B is related with cooperatives. So part 7 को delete किया था. Yes, Pranshi, Govil, Kushagra, you both are right. B is the right answer to this question. So part 7 को delete किया गया था. That is what you should know. And it talked about उस जमाने में क्या होता था. Just before this amendment, so there were part A, part B, part C, part D. 4 तरह के states होते थे. ठीक है. So just after we got independence, so all states were not treated equally. There was concept of A, B, C and D states. 4 तरह के states होते थे. If I am not wrong, let me show. हाँ. Part A former governors province कहलाता था. Part B former princely states. Part C chief commissioners province. Part D अंडमान निकोबार. इतना याद नहीं रखना है, but have a rough idea. ठीक है. और जितने भी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया है, what we call it as linguistic reorganization of states, that was done after a result of this reorganization of states. I hope you are aware of this. इंडिया में जो स्टेट्स बनाए गए वो लैंग्वेज की बेसिस पर बहुत सारे बनाए गए ना, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, स्पेशली आंध्र प्रदेश, है ना, अब तो खैर फिर तेलंगाना एक्सेट्रा. सो लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स भी 7th अमेंडमेंट से रिलेटेड है. 7th अमेंडमेंट के साथ साथ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था. That is what you should be knowing. और ये चारों स्टेट्स को एक कर दिया गया, वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया. And now we are having only one uniform structure of states. We do not have A, B, C, D states. स्टेट होगा चाहे तो यूनियन टेरिटरी होगा, है ना. Now we are having concept of state और यूनियन टेरिटरी. The concept of union territory was brought. उससे पहले A, B, C, D states 4 states होते थे. Now we are having states and union territory after 7th amendment. ठीक है. So ये सब पता होना चाहिए. We had discussed also कि Article 1 talks about India, that is Bharat shall be union of states. Schedule 1 talks about all the states and union territory. जब मैं schedule की क्लास ले रहा था, when I was taking class of schedules, I had discussed that Schedule 1 talks about, mentions all the states and union territory. Currently we are having 28 states and 8 union territory. एक क्वेश्चन है CLAT का 2025. है ना. और क्या किया गया 7th amendment में? 7th amendment also brought the concept of appointing additional and acting judges in high court. तो आप देखोगे जब भी जज बनते हैं तो पहले एडिशनल जजेस बनते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट होते हैं. So that concept was brought by 7th amendment, है ना. Then earlier before 7th amendment, one person can be governor of one state, but now one person can be governor of multiple 2 or more states also. इसको कहते हैं एडिशनल चार्ज. आपने देखा होगा एक गवर्नर है एक स्टेट के और दूसरे स्टेट का भी चार्ज दिए हुए. आई एम श्योर इफ यू हैव रेड न्यूज़पेपर यू हैव कम अक्रॉस इट. So that is also brought under 7th amendment. पहले ये होता था कि एक इंसान सिर्फ एक ही स्टेट का गवर्नर बन सकते हैं. अब ऐसा नहीं होता. अब मल्टीपल स्टेट्स के गवर्नर एक बार में बन सकते हैं. मतलब एक स्टेट के होंगे गवर्नर और एक का एडिशनल चार्ज दिए हुए होंगे. दैट इज व्हाट वी डिफाइन. ठीक है. फिर और क्या क्या लाएगा? एडिशनल एक्टिंग जजेस हो गया. फिर इसमें और कुछ नहीं है. यस ये हो गया, है ना. पहले ये होता था 7th अमेंडमेंट के बाद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हो गया. लिंग्विस्टिक लाइंस पर स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना. ठीक है. कॉमन हाई कोर्ट्स अलाउ किया गया ना मल्टीपल स्टेट्स के लिए आल्सो. सो that is what you should know. Now let's talk about this next one, 24th amendment 1971. This happened during the time of Indira Gandhi, है ना. Okay, so 24th amendment is considered as a response to which judgment of Supreme Court? देखो अब इसको आप बैकग्राउंड समझना है तब आप समझ लोगे. फर्स्ट आंसर मी, देन आई विल एक्सप्लेन. अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं. फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में अगर कंट्रडिक्शन हो रहा है तो कौन जीतेगा? हु शुड विन? फंडामेंटल राइट शुड विन और डीपीएसपी शुड विन? हु शुड बी गिवन प्रोमिनेंस? इस पे कई सारे जजमेंट्स हुए हैं इस पर, दिस थिंग पर. यस द राइट आंसर इज गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था. उसको रिस्पांस में ही बनाया गया था. Not always fundamental rights. Yes, very good. People are writing कि fundamental rights will be given privacy to DPSP, but this is not always the case. मेजॉरिटी केसेस में बट नॉट ऑलवेज. ठीक है. इसी पर सारा हंगामा हुआ है. ठीक है. मेनी जजमेंट, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, ऑल दिस केस, 24th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, ऑल इज रिलेटेड विद दिस. चंपक दोराईराजन केस कि फंडामेंटल राइट जीतेगा या डीपीएसपी जीतेगा. तो ये लड़ाई बहुत दिन से चलती रही है एंड देयर लॉट ऑफ केसेस रिलेटेड विद दैट.
खैर गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फंडामेंटल राइट आप अमेंड ही नहीं कर सकते हो, लाइक समथिंग लाइक दैट. द पार्लियामेंट सेड दैट यस यू कैन नॉट अमेंड इट. सो बेसिकली 24th amendment was brought और it is considered as a response to गोलकनाथ केस where पार्लियामेंट ने आर्टिकल 30 में साफ लिख दिया. जैसे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में क्या लिखा है कि स्टेट जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स ले नहीं सकता है, कैन नॉट स्नैच. बट फिर 13 क्लॉज 4 में ऐड कर ये कह दिया कि अंडर आर्टिकल 368 इट कैन बी डन. Nothing in this article shall apply to amendment. If we are doing amendment under article 368, we can take the fundamental right. ये कहां लाया गया था? ये 24th amendment से लाया गया थी वाला लास्ट वाली लाइन. ठीक है. सिमिलरली आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 वाज ब्रॉट. ठीक है. और इसमें भी ये ला दिया गया कि यस वी कैन डू any amendment. We have full power. The parliament has full power to do any amendment and it cannot even be challenged in the court. यहां तक लिख दिया था कि चैलेंज कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया सकता है. So this was struck down by the Supreme Court Minerva Mills केस में कि ऐसा थोड़ी होता है. Judicial review is a basic structure of constitution, है ना. ये 1980 में आया था Minerva Mills केस. देखो होता क्या है, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी पे काफी लड़ाई हुई है. ठीक है. So lot of judgments when you read about it. So initially यही था बिलीफ कि फंडामेंटल राइट इज प्रोमिनेंट टू डीपीएसपी इन चंपक दोराई राजन केस, शंकर प्रसाद केस की फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फिर बाद में कहा ये गया कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं किया सकता है. किसी किसी केस में कुछ कहा गया. फाइनली जो है वो ये है कि बॉटम लाइन ये कि फंडामेंटल राइट्स आर ग्रेटर देन डीपीएसपी बट विद सम एक्सेप्शन. यस. And not what are those exceptions? We will discuss 25th amendment. तो आप समझोगे. So now let's talk about 25th amendment. Then you will understand. अभी जो है मामला वो यही है. Which article was inserted by 25th amendment 1971? Article 31 capital C, 43B, 39 capital A, 48 capital A. What is the right answer? यही है जिससे आपको समझ में आएगा कि there are cases where DPSP has primacy over fundamental right, and that is this 25th amendment. ठीक है. So basically, what is the right answer? Yes, the right answer is 31 capital C. Yes, Koshagra, very good. So A is the right answer to this question. इसमें ये लिखा गया, if the law is made to implement DPSP of 39B and C, then 14 and 19 can be violated. अब देखो क्या मतलब होगा, मैं बताता हूँ. I have just told you that in general, that is what you have also answered me, that fundamental right is greater than DPSP. कि generally fundamental rights को ज़्यादा value होता है, justiciable होता है, non-justiciable होता है. But in this case, in this article 31 capital C was inserted और इससे ये बताया था this was upheld by the Supreme Court. So this is currently implemented. आज के दिन भी यही है केस. ठीक है. मरेवा मिल्स केस में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंप्लीमेंट भी अपहेल्ड किया था. तो मैं बता रहा हूं, देखो see it, this is a DPSP, right? So DPSP is non-binding enforcement, but if the parliament makes a law, then of course it can violate article 14 and 19. मैं बताता हूं. अब देखो 39B पढ़ो क्या लिखा है. The state that the state shall ensure that the ownership, control of the material resource of the community so as to distribute to serve the common good, that the operation of economic system does not result in concentration of wealth. Basically इसकी बात क्या हो रही है? Minimizing inequality की बात हो रही है. Yes, minimizing inequality या reducing concentration of wealth. यानी कुछ लोगों के हाथ में सिर्फ पैसा नहीं है. So basically this was also, अगर आप जमींदारी abolition करोगे, so this is one example of that. Yes or no? आपको पता है जितने भी जजमेंट्स हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसे केशव नंदा भारती के, ये सब जो है सारे केसेस जो है जमीन से रिलेटेड है, लैंड डिस्प्यूट ओरिजिनली, बिकॉज सब कुछ लैंड ही उस जमाने में जमीन ही सब कुछ होती थी, इवन टुडे आल्सो. So basically, because zamindari abolition means we are snatching indirectly land from zamindars and giving it to the poor. Something similar to that. ठीक है. इसी टाइप की कुछ चीज है कि आप मिनिमाइज कर रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. तो जमींदार ये कह सकता है कि मेरा 14, 19 सब वायलेट हो रहा है. तो ये कहा गया कि हाँ, आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 19 में सब है ये, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इज देयर, फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और 31 कैपिटल सी में यही मेंशन है कि अगर हमको ये दोनों आर्टिकल इंप्लीमेंट करना होगा तो हम इसको और इसको वायलेट कर सकते हैं. यू गॉट इट? So if I have to implement article 39B and C, then we can violate article 14 and 19. Is it clear? ये भी recently न्यूज में था इसी कारण से. But this is a DPSP, whereas this is a fundamental right. Okay? So यहाँ पर for this purpose DPSP is greater than fundamental right. Yes? Is it clear?
Is it clear? So basically, I'm saying Parliament can make laws. Of course, if a Parliament can make laws, it can make a law like that. That for the enforcement of 39B and C, which is a DPSP, Article 14 and 19, which is a fundamental right, can be violated. ठीक है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड भी कर लिया. ठीक है, इतना पता होना चाहिए बस. Okay, I hope it is clear. That is what you should be knowing. इससे ज्यादा नहीं जाना है. Now let's move on to the next one, and please tell me which year and which amendment. देखो मेरे पास में इससे बहुत कुछ किया गया प्रिंस गोयल. बस वो वाला पॉइंट जितना मैंने बताया फिलहाल की जरूरत नहीं पढ़ लेना आप. ठीक है, सो व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड. मेरे नाम में जो ये था ना, इसमें ये लिखा हुआ था 368 क्लॉज 4 और 5 ये लिखा था कि जो जुडिशियल रिव्यू है, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है 368 के अंदर, तो जो जुडिशियल रिव्यू वो नहीं है, खत्म कर दिया था पार्लियामेंट ने. जुडिशरी कैन नॉट लुक इनटू द अमेंडमेंट, बट द बेरेरा मिल्स केस सेड नो, इट कैन बी. ऑफ कोर्स द जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट उस वक्त तक आ चुका था. 1980 का जजमेंट है ना, 1973 में केशव नंदा भारती केस हुआ था. ठीक है, I hope it's clear. Minerva Mills. Okay. So basically we are talking about this mini constitution. Tomorrow we'll be having a class for that. ठीक है, और ये 42nd amendment को मैंने आज इस क्लास में इसलिए नहीं लिया because it is very detailed. इसमें पूरा नए नए कई सारे पार्ट्स ऐड किए गए. I hope you are aware ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है ना, पार्ट्स ऐड किए गए. Then we had preamble amendment हुआ, fundamental rights में बहुत सारे एडिशन हुआ, fundamental duties, in fact the separate fundamental duty got added, है ना, even DPSP से many articles got changed. So that is why I have decided to take a separate class. So tomorrow at 6 p.m. we will be having class for 42nd amendment. कल 6 बजे 42nd amendment की क्लास होगी, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, I hope you all are aware of that. Let us move on, है ना. अच्छा, एक चीज और पूछनी है. This actually was brought during the time of national emergency. So please tell me, national emergency is invoked under which article, and how many times we have seen national emergency? कौन से आर्टिकल के अंदर नेशनल इमरजेंसी इन्वोक किया जाता है, और इंडिया में अभी तक हम लोग कितनी बार नेशनल इमरजेंसी देख चुके हैं? ये कोई बता सकता है? Because one is very famous, but you have to tell me how many. Yes, 3 times. Very good. और आया कब था? So 3 times हुआ था, but the most prominent one, which everyone knows, is 25th June 1975 to 23rd March 1977. This is because of internal disturbance की वजह से हुआ था, तो ये वाला ज्यादा हंगामा हुआ था, है ना. And the other two was actually because of war, है ना. तो अगर आप पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा, आर्टिकल 352 says the president can declare national emergency by war or external aggression or armed rebellion. ठीक है, तो देखो ये जो हुआ था, I hope you are aware. So 1962 में और 71 में ये दोनों तो एक्सटर्नल एग्रेशन के रीजन से हुआ था ना, एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर की वजह से, एक वॉर की वजह से, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से. 1975 वाला था, इसमें कोई वॉर नहीं था, इंटरनल डिस्टर्बेंस का रीजन दिया गया था. सो लेट मी क्लैरिफाई, ये जो एक्सटर्नल एग्रेशन लिखा ना यहाँ पर, अर्लियर द वर्ड मेंशन्ड वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस. ओके, एंड दिस वर्ड वाज आफ्टर ऑन, लेटर ऑन बाय 44th अमेंडमेंट इसको चेंज किया गया है. सो नाउ वी रीड दिस external aggression, but earlier it was a term called as internal disturbance. So Indira Gandhi had invoked emergency under that. Okay, so please remember it. We have seen emergency, though 2 external emergency and 1 internal emergency we have seen, है ना. So total we have seen 3 emergencies. Generally एक ही का नाम आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तीनों. ठीक है, because you should be knowing it. Now the next is, which of the following is considered as a reaction to 42nd amendment? Actually many things were undo by this, है ना, reversed, जिसको आप कहते हैं ना, हर चीज को नहीं, everything, not everything, but बहुत सारी चीजें जो 42nd amendment में की गई थी, या उसके रिवर्स में उसको बहुत सारी चीज को, मतलब it was done against Indira Gandhi's what Indira Gandhi had done. And what is the year? Yes, very good, Priyanshi Kushagra, you are right. 44th amendment 1978, जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी, so 1977 के आसपास, I think 77 से 80, there was जनता पार्टी गवर्नमेंट, है ना. So जनता पार्टी गवर्नमेंट was actually opposition, है ना. So they said कि अच्छा आपने वो लाया तो मैं रिवर्स करता हूँ. So many things got reversed, हालांकि सब चीज नहीं रिवर्स किया गया, but yes. And यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी कि many things like 44th amendment was there to change the term internal disturbance to external aggression. ठीक है, that is what you should be knowing about. Okay,
The next is now let's talk about next amendment. Which of the following amendment inserted the provision of anti-defection law? और आप ईयर बताओ, और who was the prime minister at that time? ये मैंने बताया भी है इनफैक्ट when I was discussing schedules. और which schedule was inserted? बताइए. Yes, Priyanshi Goel, Nandini, you both right. Priyanshi Goel, you are also right. Priyanshi Goel, yes. Kushagra, yes. 52nd amendment. Which year? कब आया था? हाँ, 10th schedule was added. 10th schedule was added. और मैंने schedules की क्लास में बताया था. Yes, 1985. Prime Minister was Mr. Rajiv Gandhi. Yes. तो देखो इसमें क्या था कि पहले 102 था एमएलएस के लिए, है ना, सॉरी एमपीस के लिए, और 194 आर्टिकल वाज देयर फॉर एमएलएस एमएलसीज के लिए, ठीक है, स्टेट लेवल पर. सो बेसिकली इसमें था कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होती है, बट लेटर ऑन दिस वाज आल्सो एडेड दैट यस यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर 10th शेड्यूल आल्सो फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ, फॉर एंटी डिफेक्शन. दिस इज एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना. बाकी और अदर रीजंस ऊपर में लिखे हैं. यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर अदर रीजंस आल्सो, जैसे अनसाउंड माइंड है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लियो, तो भी आप डिस्क्वालिफाई हो सकते हो. बट ये सब उससे रिलेटेड नहीं है. दीज आर नॉट रिलेटेड विद एंटी डिफेक्शन. लास्ट वन जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है. सो बेसिकली, है ना, आप देख सकते हो 10th शेड्यूल टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन. व्हाट इज एंटी डिफेक्शन एंड ऑल? डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्ट कर जाना. फॉर एग्जांपल, लेट्स से आई गॉट देयर इज अ पॉलिटिकल पार्टी P, I got a ticket, I fought the election, I became an MP. Now, after getting elected, I am going to political party Q. So this is actually unethical, है ना. भाई इस पार्टी ने टिकट दी, इस पार्टी के सिंबल से आप इलेक्शन लड़े, आप दूसरे के पास कहे जा रहे हो. So this is considered as unethical. Of course, this will of course be against. हाँ, this is or what we call it as horse trading. इसमें कई बार कहा जाता है कि मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है और something like that, bribery, etc. So yes, so when he or she goes to the other party, this is called as defection, and this should not be there. मतलब अगर आप दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो you should lose the seat. So that is the case. So anti-defection law was brought to ensure that you should not go to other party to lose because it may है ना, to avoid horse trading, है ना, इसको horse trading कहते हैं. Yes, Nandri, Pranchi, you are right. Kushagra, very good. तो इसके लिए 10th शेड्यूल लाया गया, है ना. अब इसको चैलेंज किया गया था. जस्ट रिमेंबर इट, दिस वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन किहोतो होलोहान वर्सेस अचीलो केस. आई थिंक ये नॉर्थ ईस्ट नागालैंड वगैरह से रिलेटेड है. ये बहुत फेमस जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया. और एक चीज और ख्याल रखिएगा, ये सब जो होता है इसे में जनरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए. यू हैव टू डिस्क्वालिफाई, है ना. बट लास्ट वन वाला जो है, दिस इज डन बाय द स्पीकर. सो स्पीकर बेसिकली एडवाइसेस टू डिस्क्वालिफाई, स्पीकर डिस्क्वालिफाइज. ओके. तो अब इसमें यह है कि इफ द स्पीकर हैज डिस्क्वालिफाइड समवन इन द 10th शेड्यूल, कैन इट बी चैलेंज इन द कोर्ट? ये आया किसी एग्जाम में क्वेश्चन, आई थिंक जामिया या किसी में आया था. सो द स्पीकर ऑफ द डिसीजन ऑफ द स्पीकर टू डिस्क्वालिफाई समवन अंडर 10th शेड्यूल, कैन इट बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट? इज देयर जुडिशियल रिव्यू? यस, देयर इज अ जुडिशियल रिव्यू. दिस वाज आस्क्ड इन एग्जाम. 2-3 साल पहले पूछा था, आई थिंक जामिया में था या एमएचसीटी में था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. इस दोनों में किसी एक एग्जाम में आया था. आइदर ऑफ दीस टू एग्जाम आस्क दिस क्वेश्चन कि इफ द स्पीकर हैज टेकन अ डिसीजन टू डिस्क्वालिफाई समवन, है ना, वेदर इट इज एट पार्लियामेंट और एट स्टेट लेवल, अगर स्पीकर ने डिस्क्वालिफाई कर दिया कि 10th शेड्यूल में आपने पार्टी बदली है और समथिंग लाइक दैट, देन इट कैन बी चैलेंज एट सुप्रीम कोर्ट. अब आप याद करो, बहुत सारे केसेस गया था, महाराष्ट्र से रिलेटेड था, एक दो और स्टेट में था जो there were allegations of horse trading, then the Supreme Court heard the matter. याद आ रहा है कुछ? 1-2 साल पहले, I'm sure you must have heard. इससे भी आप याद रख सकते हो कि yes, इसका मतलब जुडिशरी ने हियर किया था मैटर, जजमेंट हुआ, तो इसका मतलब है कि जुडिशियल रिव्यू इज देयर. That is what also you should remember. If a speaker has taken a decision, then of course it can be challenged in the court. The next is, which of the following amendment reduced minimum age for voting from 21 years to 18 years? I think ये 326 आर्टिकल में मेंशन होगा, एज वगैरह, या 325 में, है ना. सो बेसिकली मिनिमम एज पहले 21 साल हुआ करता था, बट दिस वाज लेटर ऑन रिड्यूस्ड. सो मिनिमम एज फॉर मैरिज, सॉरी मैरिज कह रहे हैं, मिनिमम एज फॉर वोटिंग
The right answer is A, 61st Amendment. Yes, Kumari Bhavana, you are right. A is the right answer to this question. ठीक है, तो अगर आप देखोगे so the 61st Amendment officially known as 1988, ये भी राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था, है ना? Lowered the voting age of elections from 21 to 18. So A is the right answer. Please remember it. ठीक है, so 61st Amendment ने उम्र कम कर दी मिनिमम एज की 21 से 18. फिर 65th Amendment ने दो चीज और लाई, ये भी थोड़ा सा बताया था. आर्टिकल 338 में we are having National Commission for Scheduled Caste was set up. Then 338 capital A, National Commission for Scheduled Tribe was set up. अब इसके बाद में एक अमेंडमेंट आता है 338 कैपिटल बी, which brought National Commission for Backward Class. ये आया था 182nd अमेंडमेंट से. This is recent one. ठीक है, and ये आपको पता होना चाहिए. Let's move on to the next one. Which of the following amendment brought the current governance structure in Delhi? जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली जो अभी करंट सेटअप है गवर्नेंस का, देयर इज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, है ना, देयर इज अ लेजिस्लेटिव असेंबली एटसेट्रा. दिस कॉन्सेप्ट व्हिच इंसर्टेड आर्टिकल, वेरी फेमस आर्टिकल 239A, है ना, वेयर दिल्ली इज गवर्न्ड. दिस वाज ब्रॉट बाय व्हिच अमेंडमेंट? 71st, 92nd, 69, 64th. क्या सही जवाब है बताओ? We had discussed it. Please tell me. Yes, very good. Priyanshi, Pranshi, Govil, Nandini, Koshagra, you are right. The right answer is 69th Amendment. C is the right answer to this question. ठीक है? Yes. 69th Amendment, Government of NCT Delhi concept लाया गया, and 239AA, है ना, जिसमें these three are actually with the lieutenant governor ideally. And rest state list पर, rest of the state list, the legislative assembly can make laws, है ना, जिसमें chief minister can work, and legislative assembly. And ये जो तीन पावर है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, this is actually in the hand of lieutenant governor, which is actually appointed by central government. ठीक है, तो इसमें काफी फ्रिक्शंस वगैरह होते रहे हैं. You must have seen it, center like the lieutenant governor versus chief minister, we had seen in the past. Fine. Let's move on to the next one. The next is, this is very very important. ये सब पूछे जाते हैं. The Panchayati Raj institution is related with which amendment? These are very much asked. मैं आपको दिखाऊंगा, एलेट के भी क्वेश्चन बताऊंगा. So these are asked in the exam. ठीक है? Yes. The concept of Panchayati Raj, it inserted, है ना, 11th schedule, made amendments, and part 9 के अंदर it is related with 73rd amendment, और 74th is related with part 9A, which is related with municipalities. It inserted 12th schedule. Yes, so here the right answer is C. Yes, very good. Ansh, Pranshi, Priyanshi, Goel, Nandini, Kushagra, you are right. So 73rd amendment 1992, है ना, 24th April, that is why 24th April is celebrated as National Panchayati Raj Day. Part 9 ऐड किया पंचायत में, है ना, 11th schedule added. Similarly, we have seen, हाँ, इसमें आप चाहो तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ सकते हो थोड़ा सा, कि इसमें रिजर्वेशन वगैरह होता है, 1/3 वुमेन को, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब को प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन. देन 74th अमेंडमेंट, है ना, सो इसमें जो है 9A पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज जो अर्बन एरियाज में होता है, जिसको कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज, है ना, 12th शेड्यूल गॉट एडेड, है ना, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. समथिंग सिमिलर इज देयर आल्सो, कि वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन, SC ST के लिए प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन द रिजर्वेशन इज देयर, है ना. यहाँ ये सब होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन कमेटी, वार्ड कमेटी. The next is right to education is a fundamental right. That was declared in under which amendment? ये तो बहुत फेमस है. इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था, है ना, TMA पाई फाउंडेशन केस वेयर सुप्रीम कोर्ट सेड राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर 21. इसमें तो नया आर्टिकल ही ऐड कर दिया. ठीक है, so they added a new article. What is that article? Article 21 capital A. Separate article got added. It is 6th amendment. This we had discussed. A is the right answer. ठीक है, so it is 6th amendment के अंदर राइट टू एजुकेशन को एक सेपरेट आर्टिकल बना के ऐड कर दिया गया. 6 to 14 years, this is you should know, 6 to 14 years के लिए elementary education is compulsory. Okay, that is what you should be knowing about. Yes,
A is the right answer. Yes, Nandini, Priyanshi, you all are right. Now let's move on to the next one, है ना? और एक दो चीज और 86 अमेंडमेंट ने ऐड किया. 86 अमेंडमेंट एडेड समथिंग मॉडिफाइड समथिंग इन डीपीएसपी आल्सो. 45 में पहले ये था अर्लियर, अब थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर दिया लाइन, और ये हो गया नाउ 6 to 14 ईयर्स के लिए. और फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर ओरिजिनली 10, मैंने बताया था 11th लास्ट वन वाज एडेड बाय दिस 86 अमेंडमेंट. तो ये 86 अमेंडमेंट ने ये ऐड कर दिया 11th fundamental duty, है ना. It shall be the duty of every citizen who is a parent or guardian to give opportunities to ensure that the child between 6 to 14 years should get education and all. ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया. ठीक है. Now the next one is, इस पर भी काफी मैंने डिस्कशन करा है. Total of number of ministers cannot exceed 15% of the total member in lower house. मतलब जैसे अगर पार्लियामेंट केस में लोकसभा है, तो लोकसभा में 543 सीट्स आर देयर. So 15% of 543, कैलकुलेट करोगे आगे 15 by 100 into 543, ये 81 पॉइंट समथिंग आता है. प्लीज चेक इट. तो रफली अराउंड आई थिंक 81 के आसपास होगा. मतलब यू कैन नॉट हैव मोर देन 81 मिनिस्टर्स. इससे ज्यादा मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हो सकते, है ना. दैट इज एक्चुअली ब्रॉट अंडर. तो 50% का लिमिट जो लगाया गया था किस अमेंडमेंट पर लाया गया था, तो दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 75 1A. यहां मेंशन्ड है, brought by 91st amendment. So A is the right answer to this question. ठीक है. तो अगर आप देखोगे, मैं दिखाता हूं, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल हाउस, है ना. और मैंने इस क्लास में, इन दिस क्लास, जस्ट सर्च दिस ऑन यूट्यूब, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज. और मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज आर आस्क्ड इन एग्जाम. सो अगर आप PYQ उठा के देखो क्लैट का, दे हैड आस्क्ड मिनिस्टर्स. So here I had discussed about it, the important ministers, cabinet ministers, minister of state, है ना. 91st amendment, article 75 1A we had discussed. So ये वाली क्लास देख लेना, है ना. Now let's talk something about it. 93rd amendment क्यों याद है? Just remember it because I hope you all are aware of that. SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन in 93rd amendment से लाया गया था. जैसे IITs, IIMs, I think NLUs, जो भी colleges, central colleges, and central universities, we have reservation for SC, ST and OBC. That was brought under 93rd amendment in educational institutions. ठीक है, that is what you should be knowing. And the next is 97th amendment is related to what? Cooperative, free speech, right to education, right against exploitation. यस प्रांशी गोविल, राइट. वो कॉपरेटिव्स, है ना. अब देख सकते हो 97th अमेंडमेंट में आर्टिकल 19(1)(c) में भी मेंशन है कॉपरेटिव्स के बारे में. आर्टिकल 43(b) में भी मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और एक सेपरेट पार्ट ऐड किया गया था 9(b) रिलेटेड विद कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो द राइट आंसर इज A is the right answer. Yes, Nandini Chaudhary and Pranshi Govill, you both are right. ठीक है. We are having now minister also, separate minister. Mr. Amit Shah is the home minister as well as minister of cooperation related with cooperatives. Now this is very 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 important. 99th amendment, ये तो बता दो. स्टार मार्केट, रेस्ट भी बता दो. बाकी चारों का अगर आप अमेंडमेंट बता दो, बिकॉज ऑल 4 आर रीसेंट वंस. ये सब पता होना चाहिए. रीसेंट वन से तो आपको पता होना चाहिए कि रीसेंट अमेंडमेंट कौन कौन है. रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. Guys, NJAC is very important. B is the right answer. मैंने क्लास लिया इस पर, देखो आप ये जाना और सर्च करना. दिस Collegium career launcher, search it. I have discussed how the appointment of judges happened. Appointment of High Court and Supreme Court judges. ठीक है, ये जरूर से देखिएगा because here I have discussed about NJAC, Collegium system and all. So the right answer is B. तो मैं बता देता हूँ. Yes, कुशाग्रा, you are right. ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश के साथ, 100th amendment, where we have exchanged some of the territories. ठीक है, एक्सचेंज हुआ था. GST is under 101st amendment, and 1st July 2017 it was brought. National Commission for Backward Class brought under 338 capital B. थोड़ा देर पहले भी मैंने बताया था. It was made a constitutional body under 102nd amendment. ठीक है, that is what you should know. Yes, Pranchi, very good. 101st amendment है, ऑप्शन सी का, GST का. Good.
So 99th amendment, NJAC was brought. Later on, it was struck down by Supreme Court. ये मैंने यहाँ बताया है. Please watch this. We have discussed already. The next 100th amendment, we have told you, land boundary agreement. Some exchange of agreements, exchange of enclaves was done. With the Bangladesh, कुछ exchange हुआ था border area में. Then 101st amendment is related with GST, was brought, the constitutional governance and all. ये है GST council का article 279 capital A, because it remains in the news. अगर आप अखबार पढ़ोगे तो ये वाली न्यूज आती है अक्सर. Then 101st second amendment, 338 capital B, inserted National Commission for Backward Class was made constitutional body. ठीक है. Then 103rd amendment, so it brought 10% EWS, economically weaker section के लिए reservation. I hope you are aware of this, and it was upheld by the Supreme Court 3:1 in Janhit Abhiyan versus Union of India case. ठीक है, तो याद रखिएगा. Then 104th amendment is related with actually क्या है, देखो SC/ST का reservation को extend किया गया for another 10 years. There is a reservation for scheduled caste and scheduled tribe in Lok Sabha. This has been extended, but Anglo-Indian के लिए खत्म कर दिया गया. I hope you are aware. जैसे for example in Lok Sabha we had 543 plus 2 Anglo-Indian seats. This concept is gone now. अब ये नहीं concept होता है after 104th amendment. But जो 543 के अंदर here SC/ST were given reservation, that reservation is extended for the next 10 years. ठीक है, याद रखिएगा. These are the things you should know. Then 105th amendment actually overturned the judgment of Supreme Court. एक Supreme Court की judgment आई थी 2021 में. They said that only the central government can notify an OBC. But later on 105th amendment said that no, even the state can do. So the 105th amendment was brought by the parliament to overturn a judgment of Supreme Court. ठीक है, तो फैसला पलटने के लिए एक तरह से पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था कि ओबीसी को स्टेट भी आइडेंटिफाई कर सकती है. ठीक है. The next is 106th amendment. Again very very important, and this is the most last amendment. ये भी पूछा है ALET में. क्या पूछा है कि how many amendments have been done so far. इस तरह से how many amendments have been done so far. अभी तक कितना amendments हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में. So 106 अभी तक कितना ही है. And this is related with नारी शक्ति अधिनियम. क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम means women's reservation bill. So this provides 33% reservation in Lok Sabha, Legislative Assembly of States and Legislative Assembly of Delhi. देखो अब कहां पर you have to be careful. It does not provide 33% reservation in Rajya Sabha. ऐसा कुछ नहीं mention है. It does not provide reservation in member of Legislative Council. It only provides in Lok Sabha and MLA, member of Legislative Assemblies. राज्यसभा में और MLCs में नहीं होता है. Similarly SC/ST का भी जो रिजर्वेशन है ये भी सिर्फ लोकसभा के लिए होता है, राज्यसभा के लिए नहीं. You have to be careful. ठीक है, छोटी छोटी चीजें बट स्टिल. लेकिन इसमें एक मसला है. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद 106th amendment? इट विल नॉट बी इन्फोर्स्ड राइट नाउ. इट विल बी इन्फोर्स्ड वंस, है ना, द डेलिमिटेशन इज डन आफ्टर 2026. सो मोस्ट लाइकली देयर विल बी अ सेंसस इन 2031. सो उसके बाद ही होगा. इज इट क्लियर? सो 106th amendment was done in 2023. I hope you are aware. This is the first amendment done in the new parliament building. Okay. So I hope it is clear. So this is all about today's class. Tomorrow I'll be meeting you with a very very important class, that is for the second amendment 1976. We will discuss it in detail. ये हम लोग डिटेल में कल जानेंगे 6 PM पे. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.